ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਮਸਲਾ ਬਣਿਆ ਜੀ? ਉਹ ਫਾਇਰ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਸਰ? ਉਹ ਮੇਰੀ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਆਗ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ? ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਬੈਗ ਸ਼ੈਗ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਆਂਦੇ ਨੇ? ਮੈਂ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਛੱਡਿਆ। ਇਹ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਹੀ ਕੰਟੈਕਟ ਖਤਮ ਕੀਤਾ। ਕੰਟੈਕਟ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ? ਯਾਨੀ ਕਿ ਅੱਜ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਪੇਪਰ ਜਾਂ 10-15 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ? ਪੇਪਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਪੇਪਰ ਹੈ ਮੈਨੂੰ 2 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਨਹੀਂ, ਯਕਦਮ ਕੰਟੈਕਟ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਆਂਦੇ ਨੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਕੰਟੈਕਟ ਖਤਮ, ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਛੱਡਿਆ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਐਸਾ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਗਲਾਟੀ। ਅੱਛਾ, ਕਲਾਟੀ ਕਰ ਲਿਆ ਨੇ। ਹੁਣ ਕੀ ਬਣੇਗਾ ਤੁਹਾਡਾ? ਫੌਜੀ ਕੈਂਪ ਵੀ ਭਾਈ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਜਾਓ ਕੰਮ ਲੋੜੋ। ਅੱਛਾ, ਕੰਮ ਲੋੜੋ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਹਾਂ, ਸਾਲ ਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ। ਅੱਛਾ, ਚਲੋ ਜੀ, ਹੁਣ ਇਹ ਮੀਡੀਆ ਸ਼ੀਡੀਆ ਆਈ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਅੱਲਾ खैर करे, कोई ना कोई तो सबब बनेगा ना कोई तो मसला हल होगा। और कोई कुछ कहना चाहो तो? नहीं कोई नहीं, अल्लाह वाला से अल्लाह की जात से बेहतर ही करेगी। बाकी जड़ी होनी सो तो बैग लेगा। एक आदमी को जो है ना, उसने कॉन्टैक्ट कैंसिल किया तो उसे कह दिया जाके जहाँ मर्जी काम करो। जी फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक ठाक है, उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे भैया। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। अल्लाह ताला का बड़े ही एहसान है, उसका फजल रहम है। तो उम्मीद है कि आप भी बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। तो जनाब भाई ने मुझे सेंड किया है, उन्होंने कहा है कि यार ये जो ना वीडियो आपने ज़रूर दिखानी है, क्योंकि यहाँ पे भी आके मसाइल होते हैं लेबर को। अभी नया काम रोमानिया के साथ शुरू हुआ है, तो जिसकी वजह से हमें वीज़े भी जो है वो प्रॉपर नहीं मिल रहा है सही तरीके से, और काम जो है ना उसमें भी रोमानियन जो गवर्नमेंट है वो हमें परेशान कर रही है। और मतलब कि जो गवर्नमेंट तो नहीं, सॉरी, जिस कंपनी के साथ हमारा मुआहदा हुआ है उसके साथ हम परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और वो हमें क्या कर रहे हैं कि पैसे जो हैं वो पूरे नहीं दे रहे हैं। और उसके अलावा जो सैलरी हमारे साथ उन्होंने यूरो में बात की थी, लेकिन वो यूरो नहीं दे रहे हैं, हमें ल्यू में जो है वो सैलरी दे रहे हैं। तो वहाँ पे हमसे बात हुई थी कि 800 या 900 यूरो आपका सैलरी होगी, 600 यूरो होगी, लेकिन वहाँ पे आके बिल्कुल उसके बरक्स है। यहाँ पे कोई हमें वो यूरो में सैलरी नहीं दे रहे और ल्यू में सैलरी दे रहे हैं। तो इसी वजह से उन्होंने एक एहतजाज किया, अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया वहाँ पे। तो उन्होंने मुझे वो वीडियोज़ बना के, दोस्तों ने, मुख्तलिफ दोस्त जो रोमानिया में है, जो मुख्तलिफ कंपनीज़ में है, उन्होंने अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया वहाँ पे उनके कमीशन ऑफिस के सामने जाके कि हमारे साथ ये ज़्यादती हो रही है, हमें पाकिस्तान से इतना कह के बुलाया गया है और उसके बाद हमें इतने पैसे दिए जा रहे हैं, हमारे साथ कोई अच्छी ट्रीट नहीं की जा रही। तो बराए मेहरबानी हमें जो है वो कोई हमारे साथ इंसाफ किया जाए, ताकि जिस तरह जो है वो हम इधर आए हैं तो हमारे साथ इस तरह का काम हो कि हमें पैसे भी दिए जाएं और हमें काम भी जो है वो करने दिया जाए। यहाँ पे 8 घंटे काम करने की हमारे साथ जो है वो डिस्कशन हुई थी, तो लेकिन 8 घंटे का जो है वो कोई सीन नहीं। यहाँ पे हम से 10 घंटे काम लेते हैं, 12 घंटे काम लेते हैं, तो मतलब इतना काम लेते हैं कि और पैसे जो है वो बहुत कम देते हैं। काम हमसे 8 से की घंटे के बजाय 10 घंटे या 12 घंटे काम ले रहे हैं। तो ठीक है, चलो चलते हैं। अरब भाई ने और मुख्तलिफ दोस्तों ने जो है वो डॉक्यूमेंट्री बनाई है, तो आपको वो शेयर करते हैं, आपके साथ आपको दिखाते हैं। तो इंशाल्लाह उसके बाद नेक्स्ट मिलते हैं एक और अच्छी सी वीडियो के साथ। आप तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। Cei peste 100 de muncitori pakistanezi lucrează pe șantierele din Brăila și Galați. În România au ajuns acum aproape o jumătate de an, prin intermediul unei firme de recrutare din Asia de Sud. Când au semnat contractul cu firma de construcții unde sunt angajați, li s-au promis, spun ei, salarii de peste 550 de euro pe lună. Banii primiți drept salariu în România au fost însă mult mai puțini, iar asta i-a scos în stradă. You promised you will get 600 euro per month. Ne-au promis că ne vor plăti cu 600 de euro pe lună. Unora li s-au promis 550 și am semnat contractele. Aici am aflat că nu vom primi 30% din salariu. Când am venit aici, nu ni s-a spus acest lucru. Să ni se dea această diferență de 30% și biletele de avion și plecăm acasă. We want our deduction back. Vrem să ni se dea banii care ne-au fost reținuți și să nu ni se mai oprească din salarii. Aceasta este problema. Vrem salarii întregi. Noi am muncit aici și la minus 6 grade Celsius. Ne cerem doar salariile. Potrivit legii, în România, muncitorii aduși din afara Uniunii Europene trebuie plătiți cu salariul minim pe economie. În cazul firmelor de construcții, acesta este de 3.000 de lei. Angajații din Pakistan care au ieșit în stradă au încercat să afle de ce nu se respectă contractul pe care l-au semnat. Răspunsul pe care l-au primit i-a enervat și mai mult. We will ask about our... Am întrebat despre salariile noastre, despre banii noștri și ei ne-au răspuns: ar trebui să vă întoarceți în Pakistan. Dacă ne trimit acasă, de ce ne-au mai adus aici? De cealaltă parte, reprezentanții firmei de construcții pentru care lucrează pakistanezii susțin că muncitorii au primit mai puțin bani pentru că au fost leneși. În plus, din salariul au fost scăzute cheltuielile cu masa și cazarea. Condiția este să se muncească 8 ore, nu să se stea 8 ore. Deci cam asta este esența muncii, pentru că eu nu mă fac că plătesc 8 ore, nu am tăiat nimic, pentru că eu nu am voie să tai, dar nimeni nu interzice să îmi recuperez cheltuielile cu casă și masă. Nemulțumiți de felul în care sunt tratați în România, unii dintre muncitorii pakistanezi au reclamat situația la Inspectoratul de Muncă.
They wasted our most precious time. For example, we are applying till the getting visa stamp from embassy. It's eight months we wasted. At the end, they will. Whenever we came at the last stage, we at the government office, protection of immigration, they sign an agreement without telling us, without showing us whatever. You just sign. But they did not telling us what they are. We asked, but they denied. Just taking us sign, too much sign. What do you want to do now? Now, after reaching here, we now from our this employer that your 30% salary will be cut. At this first stage to last, even we travel here, I don't know our 30% salary will be deducted. But what here we not even receive our better salary. They promised our net. Even so far I did not receive my pay. You intend to go home? No, yes, no problem. This is too much problem. What they are giving? They give us our balance, whatever they cut our salary, over 30%. Arrange our tickets, we will go, no problem. Actually, for 5 months we are getting the salary that with deduction. So we want our that 5 months deduction back service, and we want our record that what they are deducting, why they are deducting, everything mentioned on the salary slip and on a paper. So we want that deduction of the salary, and 15 days they are taking the down salaries. So we want that back, and the company is deducting 20 to 30%. Except the salary, 20 to 30% they are deducting. We also don't want to deduct for that 20 to 30%. So we want our deduction back, but whatever they deduct from our salary, we want that back. And the 20 to 30 deduction should not deduct from our salary. Because of that, also we are in problem. We are not getting the full salary. Two representatives, they are coming to the camp. One man is Mr. Lado and Mr. Durban. We also talked them yesterday and 2 days ago, but they just threats us. We were asked about our salary, our money. So they just saying like that, you should go to Pakistan. So why if you will go to Pakistan, why you bring us here? कितना एक मीटिंग है या 5 मीटिंग है? And 5 days of the meeting. But the company is saying we have to work 6 days of the meeting and 10 hours of the work. You are not working like this, so we are not changing the salary. ਓਏ ਉਹ ਤੋਂ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਫਿਰ ਸਿਰਫ ਦੋ ਬੰਦੇ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਯਾਰ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਪਨੀ ਆਉਂਦੀ ਕੰਪਨੀ ਬੰਦਾ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਸੀ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ We are not getting all the full salary. It is not one time. It is since 5 months same thing. So we are coming from Pakistan. This more than 300 people. Some paid there 3,500 euro. Some paid 4,000 euro. Some paid 2,500 euro. And everyone is taking the loan. We are not able to recover our money. So we are not able to recover the money. So if the company will pay us only 500 euro after 15 days, even we get 1,500 lei. Okay, I'm going to 5 months, huh? Yeah, 5 months. 8 ਘੰਟੇ ਵਾਲੀ ਵੀ ਦੱਸ ਨਾ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸਾਰੀ ਦੱਸੀ ਉਹਨੇ ਸੋਚ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨੂੰ ਗੱਲ ਮੈਂ ਬੜੀ ਸਮਝਾਈ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਬਸ ਇਹ ਮਰਨਾ ਇਹਨੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂ How much it is? 9 and 5 total, maybe 1,400. But he have 3,000 lei. He have 3,000 lei salary. Contract 521 months? No, this 15 days. 15 days. Another 15 days, only 950. Okay, but he should get 3,000 lei for this 1 month. He is getting 1,400. ਆਹੋ ਤੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲੈ ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬਸ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੇ ਹੁਣ ਕੇ ਆਤੇ ਲਾ ਤਸਲੀਮ
But after 15 days, first salary they are sending, half salary, they are sending us only 500 lei, 600 lei. Even we should get 1300 lei, 1500 lei. But we are not getting the full salary. We are coming from Pakistan, we pay there 3500 euro, 4000 euro. It means more than 10,000, 12,000 lei. So we have to recover. If they are not paying us the right salaries, how we will recover that? We have families there. You don't have, actually, you can go in Pakistan because you don't have so much money to return to your country, right? No, how we will go? We are here, we paid there 4 million in Pakistan, 4,000 euro, 35 euro. If we go without empty hands, so what we will do from there? What we will do to go there? ਕਟੌਤੀ ਦਾ They ਨਹੀਂ ਸੀ should ਦੱਸਿਆ pay ਉੱਥੇ us our every salary. What we ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੱਸਿਆ ਕਟੌਤੀ ਦਾ then we will go back. 4 ਸਾਲ Okay? ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੱਸਿਆ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ ਇਹ ਝੂਠ ਮਾਰੇ And also the agreement is something and 4 years. they 4 years. Okay, agreement. We are working 4 years. Your name. Muhammad. Muhammad We need, we come here but make a money to send our country. But they don't give, not give us the proof how much we ਸਾਨੂੰ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਪੈਸੇ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਣ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ account. When we asked them, they said you go to Pakistan. So you can go right now to the firm with us, and we can try to introduce you to talk with the. Okay, give me 5 minutes. We came here approximately 3 months ago, some people 5 months ago. They promised our agent in Pakistan, they promised in the category, for example, I am mason bricklayer, he promised you will get 600 euro per month. At any other persons have 550 per month, he promised you will get. We signed an agreement. He firstly promised you have to pay in Pakistani rupees 1,50,000. But at the end, they demand their prices. They approximately 5 months we are able, we did not get any salary slip. At the end, 15 days and 30 days, 2 times we get our salary. So we get the salary message. 10 ਨਾ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਹੋ ਗਏ ਉਸਤਾਦ 10 ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੈਨੂੰ ਸਮਝਾਈ ਦਿਸ ਪੀਪਲ 10 ਹੀ ਯਾਰ ਦਿਸ ਸਪੀਕ ਦੱਸਿਆ ਦਿਸ ਸਪੀਕ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਓਏ ਇੱਥੇ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸੀ ਅੱਗੇ ਕਰੀ ਆਰੀ ਕਿਸ ਮਾਰਨੀ ਆ ਉਹ 2900 ਬਣ ਗਈ ਨਾ 600 plus food accommodation and medical. Condition is they told us 349 days salary and they told us we are paying taxes and 30% we will deduct. Sorry, let me understand. 3,394,500 and 49 days they told us 4 lakh. ਚਲ ਹੁਣ ਦੱਸੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਉਸਤਾਦ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੈਨੂੰ ਸਮਝਾਈ ਉਹ ਦੱਸੀ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਬੜੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਆਏ ਆ ਸਾਰੀ ਤਫਸੀਲ ਨਾਲ ਦੱਸੀ Problem is our salary problem. The main problem is the salary. We are here in Romania since 5 months, 6 months, but we are not getting our full salary. Every month we are getting half and half salary. Statement ले आओ किसी को प्रिंट है ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕਾਰਡ ਲੈਣ ਆਏ ਸਾਰੀ ਤਿਆਰ ਪੂਰੀ ਕੱਟੀ ਓਕੇ ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ शाम का बैंक स्टेटमेंट दिखा कितने ले यार कॉन्ट्रैक्ट का पेपर है किसी को Actually we don't have the print. They are not giving us the copy. That's the big problem.
दसो जी 4 साल ना कॉन्टैक्ट आ सकता है ध्यान पाकिस्तानी कॉन्ट्रैक्ट नहीं आता पाकिस्तानी कॉन्ट्रैक्ट है पाकिस्तानी एक खड़ा सी ते यार ना बना यार छड़ दियो